Hello everyone, my name is Rai Sir. Welcome at MMC. Guys, in my today's lecture, definitely I will pronounce you lots of words with comparison. Alright? अगर आप गलत pronounce करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? Right? So let's go ahead. Right, lecture 33. Okay? Now, guys, let's go ahead. Okay? Now. All right, so today's first slide is okay. Now let's pronounce. So guys, as I taught you, sound E. अब देखिए ये sound आपका क्या है? बड़ी E है और ये जो sound आपका है ये छोटी E है. आगे चल के मैं सारे sound को पिक्चर के माध्यम से और बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा. पहले आप सिंबल को अच्छे से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, सारे वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे. प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन, so definitely you will learn more and you will learn systematically. Okay, so you write and I will pronounce all the words. जहां जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करके जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करते चलेंगे तो अपने आप देखेंगे कितना परिवर्तन आप में आता है. राइट, सो गाइज दिस ये बड़ा सी है और ये छोटा ई है. तो बड़ा ई कैसे बोलते हैं हम लोग? जैसे मैंने कहा बीट, देखिए मैंने इसको खींचा, और बिट देखिए इसको मैंने नहीं खींचा. राइट, तो बोलिए बीट, बोलिए मेरे साथ बीट. राइट, बीट माने मारना होता है. बिट, अब बिट माने क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा होता है. बोलिए डीप, अगेन यू प्रोनाउंस डीप, अगेन यू प्रोनाउंस डीप. आई वॉन्ट डीप नॉलेज. और ये डिप मीन्स क्या होता है? डुबकी लगाना होता है. मेनी पीपल कम इन प्रयागराज एंड दे टेक होली डिप. राइट, ओके. ईट, ईट माने खाना होता है. और इट मतलब जानती हैं, ईट इट. ये सेंटेंस में लिखा है ईट इट. हाउ इसे? ईट इट. ओके, नाउ फील, आई फील इट. राइट, कई बार लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं. अरे हम फार्म को क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं. राइट, फिल, फिल. राइट, नेक्स्ट वन इज फीट एंड फिट. फीट, फिट एंड फिट. राइट, फीट. हीप, हीप मीन्स क्या होता है? ढेर होता है, अंबार होता है. और हिप, हिप मीन्स जो बैक बैक पोर्शन को कहते हैं, जहां इंजेक्शन लगता है उसे हिप कहते हैं. राइट, इंजेक्शन ऑन हिप. ओके. पील, पील मीन्स क्या होता है? छीलना होता है, जैसे पील द पोटैटो. ओके. पिल, पिल मीन्स मेडिसिन होती है. जहां जरूरत समझ में आए वर्ड को मीनिंग लिख लीजिएगा आप. लीव, लिव. लीव माने छोड़ना, लिव माने रहना. I cannot live without you. So I cannot leave you guys. Okay? Alright. Don't leave me. I can live without you. Hello everyone. Don't leave me. I can't live without you. Okay. Now, repeat after me. मील, मील मीन्स क्या होता है? सुबह शाम के भोजन को मील कहा जाता है. जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, टेक दिस मेडिसिन आफ्टर दिस मील. नेक्स्ट वन इज मिल. मिल आप जानते ही हैं, जो आटा चक्की होता है, फ्लोर मिल होता है. नेक्स्ट वन रीच, रिच. रीच, रिच. कई बार प्रोनाउंस करिए, रीच, रिच. नेक्स्ट वन इज रिच है. सीन, सिन. सीन, सिन. नेक्स्ट वन इज सीक, सिक. सीक, सिक. सीक जानते ही, तलाशना हो, जैसे आई एम सीकिंग अ जॉब. सिक मतलब बीमार होता है. सीट बैठना होता है. और सिट, राइट, हमने कहा सिट ऑन योर सीट. सिट ऑन योर सीट. नेक्स्ट वन इज स्लीप, स्लिप. स्लीप, स्लिप. नेक्स्ट वन इज दीज, दिस. दीज, दिस. नेक्स्ट वन इज, अब देखिए साउंड ए है और साउंड ए है. साउंड ए, साउंड ए. जैसे बोलिए बेड, रिपीट आफ्टर मी. बेड, बैड. बोलो मेरे साथ, बेड, बैड. राइट. नेक्स्ट वन इज बेट, बैट. बेट, बैट. नेक्स्ट वन इज बेंड, बैंड. बेंड माने झुकना होता है, बैंड आप जानते ही हैं. राइट, अगला एक रिपीट हो गया है, सॉरी. ठीक है, फ्लैश, फ्लैश. फ्लैश, फ्लैश.
लेंड मतलब उधार लेना हो तो जानते ही हैं, लैंड, लेंड, लैंड. नेक्स्ट वन इज लेटर, लैटर, लेटर, लैटर. नेक्स्ट वन इज met, mat, met, mat. Next one is said, sad, said, sad. Next one is set, sad, set, sad. अब इन वर्ड्स का भी उच्चारण जानना बहुत जरूरी है. जैसे what, hello everyone, what, what, what नहीं, what. Next one is why. Why are you attending my class? Sir, I am attending your class. Then I want to learn something. Where? Where do you want to go? Where? Next one is who. Who? Who are you? Next one is we. 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 Okay, now let's come with beautiful picturization. Guys, अब इसमें आपको सिंबल्स नहीं मिलेंगे, राइट? आप सबको सिंबल्स स्क्रीनशॉट ले लेकर के हमेशा आपको इसको सिंबल बीच में इंसर्ट करना है. इससे आपका सिंबल बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? ओके, चलिए देखिए, ये साउंड आपका छोटी ई है, बड़ी ई है, आप ऐसे ही बनाते हैं. और ये आपका साउंड ये है, राइट? इसे हम बोलेंगे, बोलिए बीट, रिपीट आफ्टर मी. मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं जिससे आपका साउंड बहुत अच्छा हो जाए. बोलिए बीट, और ये क्या हो जाएगा, बिट. देखिए क्या कर रहे हैं ये, बीट, ही इज बीटिंग, बीटिंग, आई एम गोइंग टू बीट यू, राइट? लाइक दैट. ओके, नाउ डीप, आई वॉन्ट deep knowledge. You want deep knowledge. This is what dip. Dip means जानते हैं डुबोना होता है, right? Eat it. देखिए क्या है ना? मैंने कहा hello, come and eat it. Eat it. Hello everybody, come and eat it. Right? Like that. Feel, fill. I feel your problem. I feel for it. I feel it. Okay? Fill. Fill means जानते ही होता है. Fill मतलब भरना होता है, right? Filling station लिखा रहता है ना पेट्रोल टंकी पर, देखिए filling station मतलब वहां पेट्रोल भरा जाता है. Next one is feet, fit. देखिए आप, ये feet है. मैं सारे वर्ड का पिक्चर नहीं दे पा रहा हूं, बट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पिक्चर्स भी दे देता हूं. दिस इज व्हाट heap. Heap means क्या होता है, ढेर या अंबार. और hip means होता है बैक पोर्शन, जैसे hip पॉकेट होता है नहीं, उसे hip कहते हैं, राइट? बोलिए पील, पिल. पील मीन्स क्या होता है, मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूं. पिल मीन्स होता है छीलना होता है, जैसे पील द पोटैटो, राइट? ओके, पिल मीन्स होता है मेडिसिन. लीव, लिव. आई कांट लिव, I can't live without you, so I cannot leave you guys. Okay? Now, meal. Meal means जानते हैं भोजन होता है, right? आप देख सकते हैं meal सुबह शाम के भोजन को कहते हैं, right? So guys, come and have meal. Eat it. Okay? Guys, please come out. Okay? Now eat it. पिछला वाला यूज समझ में आ गया आपको? मिल. मिल जानते ही हैं आप, जो आटा चक्की होता है वगैरह सब मिल से कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड, रीच, रिच. I'm reaching, so you're rich. Okay. Now scene. Scene देख लीजिए आप कितना, how beautiful the scene is. Sin means होता है पाप. Hate the sin, not the sinner. Okay. Now seek. Seek means होता है तलाशना. I'm seeking a new job. Right. Sick. He is sick. She is sick. They are sick. Okay. Now seat. Right. देखिए अब ये क्या है, seat है ना. Okay, guys, please take your seat. Sit on your seat. Sit on your seat. Okay, great. Now this is sleep. Okay, sleeping. Now slip. Slip means फिसलना. He slipped. फिसल गया. Okay. Is this. Is this. Okay. Next. Sound A and sound A. Okay. पहले बता चुका हूं. बोलिए bed, bad. Bed, bad. How bad you are. Okay. Now ये कितना सुंदर बेड है. Okay, go and sleep on the bed. Okay. Now bet, bat. Bet means जानते हैं शर्त लगाना. I can bet for it.
मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूं. Bat. Okay, you know, bat. We play the match with the help of bat, right? Bend मतलब झुकना होता है, और बैंड आप जानते हैं जब बजेगा आपकी शादी में, अब बज चुका होगा तो बहुत अच्छी बात है, समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? फ्लैश, 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 फ्लैश. नेक्स्ट, लेंड, लैंड, लेंड, लैंड. आप देखते हैं उधार देना, बेंड मतलब झुकना होता है. देखिए, ही इज, दिस पर्सन इज बेंडिंग. लैंड में सुधार देना होता है. आई थिंक यू विद द हेल्प ऑफ पिक्चर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट, लेटर, लैटर, लेटर, लैटर. मैट, मैट, मैट. देखिए आप देख सकते हैं लेटर है ये. ओके, सेड, सैड, said, sad, set, sad, right? Set, sad. Okay, let's go ahead. Now, these are the words which you must know how to pronounce. Normally, लोग क्या pronounce करते हैं इसको? What. नहीं भैया, what नहीं होगा. जब आप इसे कई बार बोलेंगे, what, what ही बोलो. What, 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 what. बोलते बोलते ये गायब हो जाएगा. बचेगा क्या? What are you doing? What are you saying? अब इसे भी लोग क्या बोलते हैं? When. इतना लंबा बोलते हैं भाई. जब इसे कई बार आप प्रोनाउंस करेंगे, इफ यू प्रोनाउंस मेनी टाइम्स when, ऑटोमेटिकली ये आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा, राइट? ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज why. Why are you going? Why are you pinching me? Don't pinch me. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Who are you? We are fine. Okay, now, so guys, now today's topic is very important. Conversation, right? नॉर्मली क्या होता है, जब कहीं आप एडमिशन लेने जाते हैं किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग में, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? सिंपली काउंसलर को केवल सुनते हैं. हम आपको बताएंगे हाउ यू विल आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस to counselor. Okay, now this is the conversation between counselor and students. So guys, यहाँ से हमारा conversation first start होता है, ठीक है? And this will really make your English very good. Okay, now let's go ahead. Now, all right, तो जाहिर सी बात है, counselor, student, सबसे पहले student, see the script guys. With the help of a script, you always take the screenshot of this script and write down this script in your copy, and then you learn and start this conversation, right? May I come in ma'am? मान लीजिए दरवाजा है. May I come in ma'am? Right? मैम बोलेंगी yes, please come in. How can I help you? Yes, please come in. How can I help you? Now, अब देखिए स्टूडेंट क्या बोलेगा? Ma'am, I want to take admission in NDA course. Ma'am, I want to take admission in NDA course. Right? Counselor will say, okay, very good plan. So, what do you want to know about this course? Counselor ने कहा, okay, that's great plan. Tell me, what do you want to know about this course? Now, student, ma'am, what is the duration of this course? Ma'am, what is the duration of this course? Right? Ma'am ने कहा, the duration of this course is 6 months. The duration of this course is 6 months. Okay? All right. Now, स्टूडेंट ने पूछा अगला क्वेश्चन, मैम इन 6 months द कोर्स विल बी कंप्लीटेड और नॉट. भाई बच्चा बहुत टेंशन में रहता है, पता नहीं कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा. मैम द कोर्स विल बी कंप्लीटेड इन 6 months और नॉट. मैडम ने भी कहा, oh yes, why not? The course will be completed in 6 months. Don't worry, my dear student. The course will be completed within 6 months. Okay? Now, student के साथ अब और प्रॉब्लम है. पूछ रहा है, what is the fee for 6 months? Madam, what is the fees for 6 months? 6 महीने का फीस कितना होगा? राइट? स्टूडेंट का द फी, मैडम ने कहा द फीस इज ओनली 40,000. 40,000. स्टूडेंट कहेगा, मैम आई एम वेरी पुअर. मैम आई एम वेरी पुअर. I cannot pay 40,000. I'm sorry. Right? मैम ने कहा, but you have to pay this.
you have to pay this. If you want to study, if you want all the facilities, if you want notebook, if you want everything, then you have to pay. Then admission will be possible, right? Okay student, ma'am, any concession please. भाई हर बच्चा कोशिश करता है कि थोड़ा कंसेशन हो जाए, कहीं दाएं बाएं का जुगाड़ लह जाए, कोई नेता वगैरह का जुगाड़ लह जाए, कोई स्टाफ का जुगाड़ लह जाए. हर इंसान तो जुगाड़ जुगाड़ में परेशान है, राइट? सॉरी, नो कंसेशन. मैडम ने कहा, आई एम रियली सॉरी, we are not giving any concession. Okay, no concession in this session. Okay, next one. स्टूडेंट पूछता है, मैम डू यू प्रोवाइड ट्रायल क्लास? हर जगह टेंडेंसी है, खास करके यूपी के कोचिंगों में आप जानते हैं और बहुत सारे कोचिंगों में, कि ट्रायल प्रोवाइड करते हैं. मैम डू यू गिव ट्रायल? डू यू प्रोवाइड ट्रायल क्लासेस? मैडम का सॉरी, we don't provide trial. Madam ne kaha, I'm sorry, I don't provide trial class, because in trial class the students do not study seriously, they study carelessly. Okay, now student, but why other coaching provide trial classes? Madam, why are you not providing? In other coaching they are providing trial classes 4 to 5 to 10 days. Okay, next, counselor, sorry, this is not in our policy and we don't believe in trial classes. Sorry, this is not in our policy, we don't believe in trial classes. Next one. Student, what are the facilities you are providing? Okay ma'am, if you are not giving any concession, if you are not providing any trial class, how can I believe, right? And what are the facilities you are providing? Okay, and now madam ne kaha ki we are providing many facilities. Hello student, we are providing many facilities like AC classroom and digital classroom, uniform, we are providing uniform, book, iCard, physical training, and filtered water, parking, and monthly test. So guys, don't worry, I'm providing all the facilities, so this way you can study very seriously. Okay, now अब स्टूडेंट के पास फिर क्यूरियोसिटी है, बच्चा फिर प्रश्न पूछता है, मैम इफ आई डोंट गेट सिलेक्शन will you return my fees? Oh, very genuine question. If I do not get selection, will you return my fees? अब इस पर तो काउंसलर की तबीयत खराब हो जाती है, राइट? If you take class seriously, अगर समझदार काउंसलर बोलेगे, if you take class seriously, sincerely, right, and definitely you will be 100% selected. Means 100% you will get selection. Okay, now student, ma'am tell me something about your teachers. Definitely, ma'am, tell something about our teachers. Okay, I'm going to pay 40,000 rupees, so I need to know more and more about your teachers. Okay, now my all teachers are very good, they're experienced, they have experience of 20 years. Now the teaching style of every teacher is good, the teaching style of every teacher is good. Okay, all right, now guys, I think you all should please practice twice and thrice, and go in any coaching and organization, interact with the counselor, do a practice. Okay, and now first you practice to yourself, practice with your friends, and if you do more and more practice, your English will be fantastic. Believe me guys, please make more and more effort and more practice. So guys, if you really learned something, if you really enjoyed, same thing I would like to say, please like this video and please share this video to your friends, relatives, and near and dear. And one thing more, that please subscribe this channel, press the bell icon, right? And please don't forget to pass your valuable comments, right? And your comments are heartily invited. Okay, all right, so guys, thanks for joining with me. Good day all, and take care all. Thank you.